मैं बोला हाँ, मैं बाइक चलाता था तो और 35 किलोमीटर रोज़ जाता था उधर एसएल स्टूडियो ट्रॉम्बे, और पैसे भी नहीं मिलते थे, बहुत कम। When there is no work happening, you'll be preparing for the next work. When it comes, you should be ready for it. हमारा एक्सपीरियंस हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि प्रमोशन करना है तो आए हैं। थोड़ी बहुत उसमें मेरे जीवन और आचरण का भी योगदान हो सकता है, या मेरी जर्नी की भी एक उसमें योगदान हो सकता है कि यार ये कौन है, कहाँ से आया। तो हम इतने एक्साइटेड हैं सिर्फ इसलिए कि ऑडियंस कैसे लेगी, क्योंकि सच में खास फिल्म है। There was so much cheer for the trailer. And पंकज जी, जब आप स्टेज पे गए, आपका फेलिसिटेशन हुआ, इतने लाउड चीयर था. I think it was a big event for all of you all. How was it that a film, a Kadak Singh film that's coming on OTT, got so much love on its trailer launch? See, the Beatles like Gana, all we need is love. When you get love, you forget everything and you're done. I mean, good. We are getting love, and really we got love yesterday after the trailer. We have seen we have heard the roar when Pankaj sir went up, and everybody laughed, all of us. So great. I'm very happy. And now you were reading that Amitabh Bachchan sir also messaged As for sir the... has tweeted, I mean, that's all. It just kept it in. So it's happy. पंकज जी, कैसे लगा जब फेलिसिटेशन हो रहा था आपका, और इतना जब एक्चुअली पीपल इरप्टेड, लोग बहुत ही चेयर कर रहे थे आपके लिए. हम प्रेस के सेक्शन में बैठे थे और वी लाइक वाओ, दिस इज पंकज त्रिपाठी द स्टार. हाउ वाज द फीलिंग? नहीं, अच्छा लगता है, ये सालों का परिश्रम है, लोग कहानियों से जुड़े हैं। ऑफ कोर्स मेरे से ज़्यादा वो कहानियाँ इंपॉर्टेंट हैं, तो उन किरदारों, कैरेक्टर्स, कहानियों का असर है, और थोड़ी बहुत उसमें मेरे जीवन और आचरण का भी योगदान हो सकता है, या मेरी जर्नी की भी एक उसमें योगदान हो सकता है कि यार ये कौन है, कहाँ से आया, कैसे काम किया। तो ये सब मिला जुला है और हमेशा अच्छा लगता है, और हम थैंकफुल, विनम्र महसूस करते हैं, बस। Parvathy, as I was discussing with you before the interview, that last time I interviewed you was during Wonder Woman. It's such a beautiful film. And we were talking about how you're not being seen in Hindi films. After Qarib Qarib Single, one of my favorite films. And now Kadak Singh. I mean, such a beautiful film. And I was reading somewhere that you said it was a 10 on 10 marks experience when it comes to film experience. So if you could discuss that. It's very rare for an actor to own up that and say, no, like something has to give. We'll think that something could go wrong, but absolutely it was, frankly, and this is not giving away anything, I was shooting for like 9 days. It was 9 full days, you know. I wasn't this fast to get off my bed and get to work. Because much like yesterday you were saying at IFFI event, opening ceremony is important because of course there's audience and worldwide people are coming down, directors, actors, technicians. But from our own industry, when we are seeing people that we have witnessed on screen and been inspired, be celebrated, it really does make you think about what your place is in this industry, why you're doing it. And I just got reminded while you were talking, and Pankaj, when you were saying, in one of your interviews you had mentioned that when there is no work happening, you'll be preparing for the next work. When it comes, you should be ready for it. And I'm constantly amazed, because I guess if there's one thing that I've ever manifested, since that's a big word these days, is to always attract. I was always praying, universe, send me people who can teach me, inspire me, and let me be surrounded by them. So this was a 10 on 10 on that for me. Yeah. Parvathy and Pankaj ji, मुझे I want to ask, recently मैं एक इंटरव्यू पढ़ रही थी, वहाँ पर ना एक्टर ने कुछ बोला, and I thought it is very important. A lot of actors talk about the process, but it doesn't translate on screen very easily, you know. But with you guys, आप लोगों के साथ ऐसे नहीं होता है. आपका अगर हम देखें like कड़क सिंह में, you as a nurse, I see the nurse, you know. तो आप कैसे वो मैनेज कर लेते हैं कि कैरेक्टर है, एक्टिंग है, सब है, पर आपने कभी प्रोसेस की बातें नहीं की? For me, I can talk for ages about process. Theoretically, we can talk for ages, but to get to put it to practice is a luck that you have to get, I feel. And sometimes I slip. I can talk about process, I can plan the process, and I do slip, and I have slipped even on our set. And just that nobody would notice that I have slipped because I've got a safety net to bounce off. I can't emphasize enough, like I can't
underline that enough, is that when I zone out, and I probably sometimes like getting out of the matrix or something, you suddenly come out and you're like, oh, and you have something that he's doing or she's doing. Sometimes I'll be sitting there to give position for their look, and I'll just be watching them perform the character. The camera is not even on me. And all I need to do is that, okay, now just sit in this moment and watch them, and I'll be back into it. So I think as much as you get processes, you can have different methods and techniques as an actor. If you're not observant and if you're not present and joyfully present, because you can't be bitter and be present, it'll carry you back in. Art has its own life. You know, storytelling and this camera, these lights, they have their own energy that seeps through you. You just have to be receiving of it. You have to be ready to receive it, I think. Yeah, because I love to talk about process a lot, and I have done that, maybe to a fault. सर आप बताइए, क्योंकि प्रोसेस की तो मैंने आपसे कभी नहीं सुनी और आपके खाली एक्टिंग देखती आई हूँ. मेरा प्रोसेस जो है ना, वो नदी बन जाना है. हाँ. नदी बन जाओ, छोड़ दो. तो वो कितनी खूबसूरत होती है. उसमें कहाँ कुछ, जिधर ढलान मिला उधर चली जाती है. गो विद द फ्लो. तो हम एक्टिंग सीखे हैं, पढ़ाई किए हैं, उस पर 2 घंटे बात भी कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है. तो और वो जब नया जोगी होता है ना, सन्यासी नया होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन की बात करेगा, प्रैक्टिस की बात करेगा कि नहीं ये रूल ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है. जब सन्यासी पुराना होता है, जैसे मन वैसे होता है. कि असल मेडिटेशन हिमालय पे जाके करने में नहीं है, चौराहे पे करने में. ट्रैफिक सिग्नल में बैठ जाओ और मेडिटेट करो. तो आप पीसफुल चाहिए, फिर काहे का मेडिटेशन करो कि उसके बीच में. तो वही है प्रोसेस कि ये जो कैमरा है ना, ये समय को, टाइम और स्पेस को ना बिना जजमेंटल हुए कैप्चर करता है. तो आप भी बिना जजमेंटल हुए बैठ जाओ इसके आगे, और जो बोलते हैं टोनी दा कर लो, सब काम हो जाता है. सर पुराने खिलाड़ी की जो बात कर रहे हैं आप, 20 इयर्स हो गए आपको इंडस्ट्री में. 2003 में आपने कन्नड़ा फिल्म की थी, फिर रन की थी, और एक्चुअली पीपल स्टार्टेड सीइंग यू चिल्लर पार्टी में या गैंग्स ऑफ वासेपुर. बट सर 20 इयर्स हो गए, एंड हाउ डू यू डिस्क्राइब योर जर्नी? बहुत मेहनत की है आपने, सबने देखी है, बट हाउ डू यू फील टुडे? पीछे मुड़ के देखते हैं पंकज त्रिपाठी कहाँ आया है, कैसे बना है? पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, लोअर बैक पेन होता है तो डॉक्टर के यहाँ गया, MRI कराए तो बोले कि आपका वो गत्ता जो है ना, वर्टिब्रा घिस गया है. तो मैं बोला क्या कारण होंगे घिसने के? तो बोला आप इधर बहुत स्ट्रेसफुल फिजिकल काम किए होंगे. मैं बोला हाँ, मैं बाइक चलाता था तो, और 35 किलोमीटर रोज़ जाता था उधर SL स्टूडियो ट्रॉम्बे, और पैसे भी नहीं मिलते थे, बहुत कम. तो बोला वो उसके लिए तब लगता है ना कि मैं लोअर बैक बताता है कि तुम बहुत संघर्ष किए हो. बाकी मेरा ऊपर सब सही है, नॉर्मल है, क्या कुछ नहीं, ये मस्ती है. मुझे भी पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ. ईमानदारी से हम लगे हुए थे, और लर्निंग के प्रोसेस में, जैसे अभी पिछली बातचीत में पार्वती ने बोला कि किरदार वो हमें कुछ दे जाते हैं आगे चल के, वैसे ही कड़क सिंह में ये AK श्रीवास्तव मुझे बहुत कुछ दिए हैं. कि अब ये 3 महिलाएं बैठी हैं, मेरे कैरेक्टर AK सिंह का, इनसे जो रिश्ता है उसका कोई नाम नहीं है. न वो प्रेम है, न वो भाई बहन है, क्या है पता नहीं. एक नर्स और एक बीमार व्यक्ति का हो सकता है, लगभग वही है, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा है. इन दोनों से क्या रिश्ता है ये कैरेक्टर भूल चुका है, इसको पता ही नहीं है. एक व्यक्ति के जीवन में 3 महिलाएं हैं, एक से रिश्ते का नाम नहीं है, 2 का रिश्ता क्या है उसको पता ही नहीं है. You know, recently I was reading somewhere that you said that you were called a difficult actor because you spoke about your dress being a little too tight or whatever. Today, when I see this relationship, you know, I was also eavesdropping an interview before this where you said that you love this process because you get to exercise the muscle of empathy and all. So when there is so much judgment around, how do you keep sane and rise above it? I cry first. It's important to let myself feel emotions, because feeling misunderstood is one of the worst things that can happen to you, because we are all children in our hearts. There is an inner child in you who always wants to be loved and cared for and understood. I think that becomes our primary requirement in life, is to be loved and cared for. And being understood is a big ask. So sometimes I feel like
we put an extra pressure on each other to, अब मुझे क्यों नहीं पहचान रहे हो, like why can't you understand me, like you know, we can't even understand ourselves. So the moment I started understanding in our situation where all these people are coming from different backgrounds, our struggles are different, but that doesn't mean that my feelings are invalid. So I genuinely, when I say I cry, it's not like a jokingly thing. I'm a good crier, something I pride myself with, because I used to mask it a lot. And then I sit with it. It's like, Abhi, why did you cry? What part of you got hurt? You know, why? Okay, so they didn't loosen your costume. So explore, like, why are they doing that? Try to have a conversation about it. So I feel like being called difficult, being put into brackets can teach. The only thing you can do is learn about yourself, how to respond to it. कुछ हम change नहीं कर सकते. The only thing that you have control over is how you feel about it. And I think that's one thing I can only start by doing that is by actually letting myself feel as poorly as it has actually made me feel. And that this industry will teach you left, right, center. That's just human nature. There is no hating it. I don't hate it. It's just how it is. So no need to complain about it or anything. But then you do find yourself in situations like this amazing team. So good where to you're see everybody like this, right? Where you're reminded that they're making the effort to understand you. Yeah. That's also possible. So then you smile and it's like balance aa jayega life mein, you know, you don't really have to force it and ask for it and all that. So I think Before she kills me, पंकज जी आपसे पूछना है कि इसके पहले जो फिल्म्स हुई OMG 2 या फुकरे 3 बहुत ही मेन स्ट्रीम एंटरटेनर्स रही, दोनों बहुत सक्सेसफुल रही, एंड नाउ कड़क सिंह ऑन OTT. तो आप नेविगेट कैसे करते हैं ये वाली जो जर्नी रही है कि 2 बड़ी फिल्में हैं, अभी ये जो फिल्में एक्सपेक्टेशंस तो रहेंगी बिकॉज पंकज त्रिपाठी है, पार्वती है, तो हाउ डू यू नेविगेट योर रोड टू दिस? मैं नेविगेट ही नहीं करता हूँ. छोड़ देता हूँ. काहे को नेविगेट करना? हमने एक्टिंग करनी थी, कर ली. हमारा एक्सपीरियंस हो गया है. कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि प्रमोशन करना है तो आए हैं और फिल्म की बात कर रहे हैं. सर ऐसे मिले ना हम. हाँ, नहीं मतलब हमने जो करना था एक्सपीरियंस कर लिया. अब हम इतने एक्साइटेड हैं सिर्फ इसलिए कि ऑडियंस कैसे लेगी, क्योंकि सच में खास फिल्म है ये. हमारा ऑन जॉब की बात होती है कि प्रमोशन में हम बोलते हैं बहुत अलग है, तो ये वैसा वाला नहीं बोल रहे हैं बहुत अलग है, ये जेन्युइनली अलग फिल्म है. हाँ, और थोड़ी इंटेलेक्चुअल भी है. मुझे 2 बार ट्रेलर देखना पड़ा तो भी मुझे थोड़ी समझ आ रही है. जी. बट OMG और फुकरे 3 ऐसी नहीं थी. ऐसे नहीं थी. बट सेम टाइम ये बहुत ही हार्डकोर कमर्शियल सिनेमा भी है. ओके. जी, कि ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल कमर्शियल सिनेमा है. जितने सारे एलिमेंट होते हैं ना उसके, वो मिस्ट्री के, थ्रिल के, ह्यूमन ड्रामा के, संबंधों के, सब है. आपको रोना भी आएगा, आपको डर भी लगेगा, आपको चिंता भी होगी कि किसने क्या किया है. तो वो सारे चीज़ हैं इसमें. एक कमर्शियल मसाला फिल्म की क्वालिटी विथ संवेदना के साथ, केयर के साथ.